आपके पास होगा वहां। सो अगर मैं इसकी बात करूं, ये लगभग 11 है और ये 20 है। सो 11 और 20, तो अगर मैं बात करूं 11 और 12, सो इट इज 31। और अगर मैं इसकी बात करूं 11 टू 22, सो 220 बाई 31। और अगर मैं 31 से 220 को क्या कर लूं, डिवाइड कर लूं, सो इफ यू सी, अगर मैं 7 टाइम्स डालता हूं, 31 इंटू 7 बन जाए 7, ये आ गया आपका 211। ठीक है, सो 7 टाइम्स डालते हैं इसको, 7 बन जाए 7 3 जा 21। सो 3 बचा हमारा, पॉइंट लगा लें, पॉइंट लगा के फिर 0 बढ़ा लिया, नहीं जाएगा, एक 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जस्ट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 ओम, क्योंकि रिजल्ट जो है 7। सो 7 और 3 10, सो अप्रोक्स आंसर इज 10 ओम। सो योर आंसर इज, सॉरी क्योंकि दोनों सीरीज में है। यस, मैं डायग्राम दोबारा बना दे रहा हूं एक बार और, अभी आंसर नहीं टिक कर रहे हैं। सो इफ यू सी, दिस इज योर ए इज व्हाट, इट इज 3, अप्रोक्सीमेट आंसर मैंने लिया था, एंड इट इज समवट 7। दिस इज ए एंड दिस इज योर बी टर्मिनल एंड समवट 7। सो योर आंसर दैट इज Rx that is equals to RTH is just approximate to 10 ohm जो होगा आंसर होगा। तो देखिए नियर टू 10 ohm या 10 ohm हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की जो कैलकुलेशन थी वो थोड़े डिफरेंट तरीके से थी, बट हमारे कोई भी रूल जो है वायलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने रूल्स ही ऐसे बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कंटिन्यूएशन में। सो वी हैव द लैटिस इन द लैटिस नेटवर्क, the lattice network, find the value of R, find the value of R for the maximum power transfer, to the load। now so हमारे ऑप्शन जो है वो है, ऑप्शंस आर 5 ohm, and next option is 6.5 ohm, and next option है 8 ohm, and the last option is 9 ohm, and the diagram is, this is I, this is your 6 ohm, this is your 9 ohm. Here we have the load resistance R, that is of variable. Then we have a resistance of 6 ohm, and then we have a resistance of how much, 5 ohm. So this is your question. Now first thing you should clear your mind, if you were asked to solve the maximum power, you cannot solve because I is unknown, the source value is unknown, so you can only solve the RTH equals to RL. That means you have only solved the load resistance problem. So let's start the problem. Now solution to this problem is what? Now अगर आपको याद हो, हम अगर जब RTH निकालते थे, RTH निकालते समय करंट सोर्स को ओपन और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट। तो इस डायग्राम को मैं बस दोबारा से बना ले रहा हूं, और दोबारा से बनाने का मीनिंग ये है मेरा, ये रहा ओपन, और if you see this is 6 and this is your 9,
and then we have a value, this is your how much, 6 ohm, and then we have a resistance of how much value, this is 5 ohm, and this is your RTH point, this is your RTH. Now what are the possibility to solve this question? So अभी तक तो हमने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं करा होगा, अगर आप देखें तो क्वेश्चन का कोई रूल नहीं है, टाइप नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्ट जरूर मिल सकता है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ये ध्यान रखनी है, आई एम गिविंग यू द accuracy as well as precision to solve the resistance problem. If you take the whole resistance calculation problem, you will have 90 to 98% solution from the concept that I have given to you, that जब भी अगर 2 पॉइंट बनेंगे या 3 पॉइंट बनेंगे तो रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल से सॉल्व होगा, और अगर 4 पॉइंट बनेंगे तो ब्रिज, और ब्रिज अनबैलेंस या बैलेंस है तो फिर बहुत अच्छा है सीरीज पैरेलल, और अगर अनबैलेंस्ड है तो अगेन स्टार डेल्टा। और अगली अगर कोई प्रॉब्लम होती है इससे भी एडवांस तो होती है वो सिमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम, और उसको बोलते हैं क्यूब प्रॉब्लम, ठीक है। और क्यूब प्रॉब्लम आपके यहाँ आई हुई है, दैट इज आंसर इज 5/6R। क्लियर है? सो हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करते समय इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि ओपन वायर को हटा देते थे अगर याद हो आपको, ये भी हटा दे रहे हैं ना। अब अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, क्या ये A है तो क्या ये A है? बिल्कुल गलत बात है ना। अगर ये B है तो B है, ये भी गलत बात है, क्योंकि इन दोनों को क्या है, रेजिस्टेंस है। सो अगर इसको मैं C मान रहा हूं तो ठीक है यहां तक, तो ये C नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको D मान रहा हूं तो क्या ये D होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं इसको D मान रहा हूं तो क्या ये D होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट अलग अलग लगे हुए हैं। नाउ इट इज अ इंटरेस्टिंग केस दैट वी वांट टू डिस्कस, कि मैंने कहा था 2 पॉइंट बनेंगे या 3 पॉइंट बनेंगे तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर 4 पॉइंट बनेंगे तो ब्रिज, और ब्रिज बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस। तो ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, ब्रिज बना दिया है। सो ब्रिज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जरा खास बात ध्यान रखिए, जब भी 4 पॉइंट बनेंगे तो हमें जो A और B है वो इस तरीके से बाहर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट के बीच का तो रेजिस्टेंस है। अगर आप बीच में रख दोगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, वो चीज देखिएगा आप लोग। तो मैं क्या करता हूं, मेरा A पॉइंट ये रहा और मेरा B पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट है मेरा C और एक पॉइंट रहा मेरा D। ये रैंडम ले सकते हैं कहीं भी, दैट डजंट मैटर कि आप A C D किधर लेना चाह रहे हो। सो फर्स्ट आई विल कवर A to C के बीच में कितना है, 5। सो दिस इज स्वीट एंड टेकिंग हियर, सो इट इज B। सो A to C is 5, A to C is 5। This is over. Again run A to D. A to D 6. A to D is 6. This is over. So A to C and A to D is over. Now B. Where is B? B to C 9. B to C 9. 9. Okay. Now where B to D? B to D 6. Okay. 6. 6. Now अब चेक करिए कि ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। So 9 6 जा नहीं होगा, 5 6 जा 30 होता है और 9 6 जा 45 होता है, और सॉरी 54। सो ब्रिज इज अनबैलेंस। और अब कोई चीज और भी रह गई है, तो C से D के बीच में तो कुछ भी नहीं है। सॉरी, ये ब्रिज बना है बट ब्रिज के मिड में कोई भी चीज नहीं है। अगर यहाँ पर करंट सोर्स होता देन इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। लेट्स चेक अगेन, कुछ रह तो नहीं गया। A से C ओवर, एंड A से D this is also over. Now B to C over and B to D this is also over. We have also 4 रेजिस्टेंस। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पर वोल्टेज सोर्स आ जाए तो वो होगा शॉर्ट, क्योंकि ये तो हुआ है ओपन, इस वजह से जो डिटेक्टर वाली ब्रांच है वो खाली रह गई है। अगर ये वोल्टेज सोर्स का क्वेश्चन होता तो यहाँ पर शॉर्ट होता और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो बहुत ईजी हो गया भाई प्रॉब्लम, यहाँ तो अनबैलेंसिंग रही नहीं। सो अगर हम यहाँ देखें, इन दोनों को अगर सही से देखें, this 6 and 6 are in series, this 6 and 6 are in series, that is 12. Similarly this 5 and 9 are in series, so 9 और 5 14। सो अगर मैं इस डायग्राम को और बना के देखूं, देखिए क्या आता है इसका आंसर। नाउ इट इज 14, ठीक है। यहाँ पर 9 और 5 14 होते हैं,
6 और 6 कितने होते हैं? 12 होते हैं. So let's see, it is 12. Now अब अगर हमें सॉल्व करना है then it is RTH. और अगर ये दोनों देखें तो ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 14 into 12 डिवाइड बाई 14 plus 12. So 14 और 12 26 हो गया. It is 26. ठीक है. So देखिए क्या पॉसिबिलिटी है कटने की. और हम 2 से इसको चेक कर लें. 6 13 और फिर कटेगा? नहीं कटेगा. सो हमें मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी. ऐसे ऑप्शन है या नहीं है? पहले एक बार मैं वैल्यू चेक कर लूं कि वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए थी. 6 6 6 5. एक मिनट, जस्ट वेट. 6 6 5 या इट इज 9. ओके, सो लेट्स सी. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 14 into 6. सो इट इज it is 84 and 84 डिवाइड बाई 13. सो 84 को मैं अगर 13 से डिवाइड करता हूँ, सो 13 पंजे 65, 13 चक 78, 84. अगर मैं देखूँ 6 कंप्लीट तो जाएगा ही नहीं. सो अगर मैं बात करूँ, मुझे 65 और 65 और 13 जो होते हैं 8, और एक बार और मैं 13 जोड़ के देखूं तो 11 91. सो आई होप सो 7 टाइम्स जाना चाहिए था ये. लेट्स सी. सो अगर मैं बात करूं 5 6 टाइम्स डाल के देखते हैं इसको. तो 13 into 6. सो 6 3 जा 8, सॉरी 1 कैरी 7. It is 78. ना 14 में से 8 गया तो कितना बचा भाई? 6 बचा. और अगर मैं बात करूं, पॉइंट लगा लूं, 0 बढ़ जाएगा. 5 टाइम्स नहीं जाएगा. सो इट इज जस्ट बिलो द, इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेट 4. सो योर अप्रोक्सीमेट आंसर इज RTH. I hope so 6.5 ohm. So this your answer is 6.5 ohm. So let's check answer is correct. Just wait. So this question is 7th. Yeah, 7th question. Yeah, it is 6.5. Correct answer. So let's move to the next question. So moving to the next question. So we will have next problem related with the maximum power. That is question number next. What is the value? What is the value of R required, or the value R required for the maximum power, for the value of R required for the maximum power transfer in the network shown in figure. Network shown in figure. ठीक है. So first we will take option. Options are 2 ohm, then we have 4 ohm, and C is 8 ohm, and the D option is 16 ohm. Now what is the figure are related with the problem? So we will have 25 volt, 5 ohm, then 20 ohm, then we have 3 ampere, then 4 ohm, and after that we will have R. So I think we have solved this type of problem earlier in the conventional type problem, but let's see, it is competitive exam problem. So solve it.
नाउ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या है देखते हैं. What is the value of R required for the maximum power transfer in the network shown in figure? Again, we have to find the RTH. If RTH we have calculated, then RTH equals to R. So, फिर ध्यान रखिएगा RTH निकालते समय क्या करना है. RTH निकालते समय जो वोल्टेज सोर्स हैं इनको शॉर्ट करना है और जो करंट सोर्स हैं उनको क्या करना है, ओपन सर्किट करना है. ये ध्यान रखने वाली बात है. सो वी विल ड्रॉ द डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू RTH. नाउ RTH निकालते समय जो वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट हो जाएंगे. ये रहा आपका 5 ओम एंड वी हैव 20 ओम. देन नेक्स्ट वी हैव ओपन सर्किट एंड देन वी हैव 4 ओम एंड देन वी विल हैव द RTH पॉइंट. RTH पॉइंट. नाउ अब हमने क्या बताया है, जब भी हम RTH निकालेंगे तो जो ओपन वायर है उनको रिमूव कर दीजिए. सो रिमूव द ओपन वायर. दिस इज रिमूविंग ओपन वायर. सो ओपन वायर इज रिमूव. नाउ वी हैव दिस 5 and 20 are in parallel and that combination is in series with this 4 ohm. So this value is 5 multiplied by 20 divided by 25. So it is 100 and 100 divided by 25, that is 4. क्लियर है. सो मैं इन दोनों की जगह कितना लगा दूं, 4 लगा दे रहा हूं. देखिए, सो इन दोनों की जगह मैं लगा दे रहा हूं 4 ओम का रेजिस्टेंस. सो दिस इज योर 4 ओम रेजिस्टेंस. सो अगर मैं यहाँ 4 लगा दे रहा हूं, सो 4 and 4 आर इन सीरीज. सो योर RTH इक्वल्स टू 4 plus 4 दैट इज 8 ओम. सो देखिए ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में अवेलेबल है. सो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सी. ठीक है. यहां तक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हम पहले इसको इरेज कर दें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मैक्सिमम पावर थ्योरम. दैट इज question number next. The maximum power that 12 volt DC source with an internal resistance of 2 ohm can supply to a resistive load is. Now options are, so we have options 72 watt, then we have option 48 watt, then next option is 24 watt and the last option is 18 watt, 18 watt. So let's see. So this is the question. Now read the question carefully. The maximum power that a 12 volt DC source with an internal resistance of 2 ohm can supply to a resistive load. Okay. So this is very basic question with respect to the maximum power theorem. So solution देखते हैं इसको हम. So क्या करा है, 12 volt का एक DC source है. This is 12 volt DC source whose internal resistance is of 2 ohm. This is about the question. Now to have maximum power, RL should be equal to RTH. So हमारा जो RL है इसमें कितना लगना चाहिए, RL should be of 2 ohm, and when RL equals to RTH, the PL max equals to
VTH square upon 4RL. Now how much is your VTH? That is 12 square 4, and RL is what? 2. So it is 6. It is 6. So 6 1 ja 2 ja, and it is 24 watt. Is there an option? Yes, we have the option number C. Agree? Next problem की तरफ बढ़ते हैं हम अपनी. Next problem for the maximum power theorem. So let's see the maximum power. Now for the circuit shown in figure, for the circuit shown in figure, for the circuit shown in figure, obtain, let's see what is this, for the circuit shown in figure, obtain the Thevenin's equivalent at terminals AB. This is the first part. So this is our first part. Now second part is what? The second part is calculate the current in RL. If RL is 8 ohm. Then next we have what problem? Third problem. Find RL for maximum. Find RL for maximum power deliver to RL. Next part, determine that maximum power. Determine that maximum power. So we will see. Now we will draw the diagram first. So we have 4 ampere. Then we will have 2 ohm, then 4 ohm, then 6 ohm, and in 6 ohm we have a parallel of current source whose value is 2 ampere, and then we have a voltage source of 20 volt, and after that we have a load resistance RL. This is A and this is B. So this is our problem. So in this problem we have to solve 4 parts. For the circuit shown in figure, first part is obtain Thevenin's equivalent circuit. Yes, if Thevenin circuit is solved, then load resistance current is solved. If Thevenin is solved, then RTH is solved. Yes, RL is also solved, and we have the maximum power also. So let's start the question for the VTH. Now, first part. So first part we will use Thevenin's theorem. The just first part is what? Removed the load resistance. Okay, so if you remove the load resistance, then you have to find the VTH. Okay, then second part is what? Then second part is what? We have to solve the value of
then if in the first part remove the load resistance and then find the VTH. The second part is what? VTH finding. So for the VTH we have to take the extra thing that is what, अगर हम इस करंट सोर्स और रेजिस्टेंस को सोर्स ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं इसको? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, source transformation लगा दें, then your question becomes very very easy. Yeah, one thing also, here we can also apply the source transformation. Source transformation, ठीक है यहाँ तक? तो 2 बार source transformation लगाएंगे और देखते हैं सर्किट किस तरीके से हमारा रिड्यूस हो जाता है. So let's see. This is 4 to 8 and 8 and 8 के साथ रेजिस्टेंस जो आएगा वो कैसे आएगा? सीरीज में आएगा, दैट इज 2 ओम एंड देन वी हैव 4 ओम. फिर अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू यूज करें तो 12 वोल्ट का सोर्स आएगा, बट लेफ्ट टू राइट करंट जाएगी, लेफ्ट टू राइट करंट दैट इज 12 वोल्ट एंड देन 6 ओम एंड देन वी हैव ए ओपन टर्मिनल. ओके, so we have covered. Now in the bottom part we have a voltage source of how much volt? 20 volt. So this is your diagram with respect to VTH. So see, the diagram becomes very very easy if you apply the source transformation rule. Okay, so apply the VTH for KVL. Now keep in mind, in this circuit the current is zero. Current is zero because it's open circuit path. What path? Open circuit path. So it is just sum or subtraction of VTI. Apply the KVL. KVL को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो देखते हैं क्या होगा ये. So KVL अगर देखा जाए तो 8 minus 2 into 0 because current is 0, minus 4 into 0 because current is 0, plus 12 minus 6 into 0 minus of VTH, and then we have what? 20 volt plus that is equals to 0. So अगर आगे मैं बात करूं, so 12 and 8 20 and 20 plus 20 that is 40. So your VTH equals to 40 volt. So hope so आपको समझ में आ गया होगा. So I am writing the first part answer. So here I am writing the VTH is how much? 40 volt. ठीक है यहाँ तक. Now solving the second part. So अब मैंने बताया था अगर आपको आरटीएस सॉल्व करना है तो आप इस डायग्राम पे कंडीशन अप्लाई कीजिए या इस डायग्राम पे कंडीशन अप्लाई कीजिए, दोनों में आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा. जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट. क्लियर है? सो मैं इसी डायग्राम पे आपकी आरटीएस की कंडीशन लगा रहा हूं, बाकी सब कुछ मैं मिटा दे रहा हूं. देखिए, सो इफ यू सी द कंडीशन ऑफ आरटीएच, so third condition is RTH because our VTH we have 40 volt. So this is short, this is also short, now this is also short and rest of things are out. Now अब ये ध्यान रखिएगा जब RTH निकाल लेंगे तो कोई टर्मिनल मार्क नहीं होगा. मार्क क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्किट उस समय डेड है और डेड कंडीशन में ना कोई करंट फ्लो करेगी ना कुछ वोल्टेज होगा. ठीक है? So how easy your RTH? 12, 6, 4, 10 and 10 plus 2, 12. So RTH is very very easy. So RTH is 2 plus 4 plus 6, that is 12 ohm. So I'm just writing answer. RTH is 12 ohm now. And I'm drawing the next part. So third part answer is what? RTH is 12. This is our step answer, not according to the question answer. ठीक है? So let's see. Now अब हमारा जो पहला पार्ट आएगा A पार्ट, वही सॉल्व होगा क्योंकि A पार्ट में कहा गया था कि आप बताइए थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक है? तो थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं हमारा एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर A. तो अगर मैं बात करूं VTH कितना आया था मेरा? 40. RTH कितना आया था? RTH जो आया था 12 ohm and this is your Thevenin equivalent circuit. So this is your A part. Now B part क्या था? Find the load current when your load resistance is 8 ohm. Okay. So 40. Yeah, you can solve like that. So it is 40
Now it is RTH is 12 and your RL, this is your RL is 8 ohm. So if you apply the Ohm's law, then you have IL equals to 40 divided by 20, that is 2 ampere. ठीक है यहाँ तक? So I'm writing here answer now from this part. So this is your answer number A. Okay, so 40 volt and 12 ohm, but the answer for this question is your IL is 2 ampere. Agree? So rest of things I am eliminating क्योंकि इस क्वेश्चन की अब जरूरत नहीं है, हमारे पास डेटा आ गया है जो हमें सॉल्व करना था. लेट्स सी. सो आगे देखते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट में, सी पार्ट में क्या सॉल्व करना? फाइंड RL फॉर द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द RL. नाउ व्हाट शुड बी द RL? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट. So this is C part. So it is VTH is 40 and your RTH equals to 12. Now my question is what? मेरा क्वेश्चन ये है कि RL equals to RTH रखा जाए कि RTH equals to RL. तो ये बात जरा बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो अब ये ध्यान रखिएगा, हमारी जो कंडीशन थी RL should be equals to RTH, जो RL की वैल्यू है वो RTH के बराबर होनी चाहिए. तो RTH था कितना हमारा 12, सो RL कितना होगा 12 ओम होगा. ये ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है आप RTH को RL के बराबर रख दें क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर. ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा D पार्ट क्या होगा. जो D पार्ट है हमारा वो है डिटरमाइन दैट मैक्सिमम पावर. सो PL max equals to VTH square upon 4RL. So if you see the VTH is 40 into 40 divided by 4 into RL is how much? 12. Okay, so it is 10 times. Now if you divide by 2, 6, then it is 5. So let's see, it is 200 divided by 6 and it is 100 divided by 3, so it is 33.33 what is your answer. Okay, so बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो अब तक हमने ये सबसे लेंथी क्वेश्चन देखा इस मैक्सिमम पावर थ्योरम क्वेश्चन का. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. क्या होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? So see the next question. So we will have next question. So we will have next question is that find the maximum power. Find the maximum power that can be delivered to the resistor R in the circuit shown in figure. Okay, so हमारा डायग्राम है 23 and then we have R here, then 5 here, and again we have 6 ampere. We have, then we have 2 ohm, and in series with that we have a voltage source of how much volt? 10 volt. So let's solve the question.
So find the maximum power that can be delivered to the resistor in the circuit shown in figure. So for that we have to take next thing. So let's see. The first step is what? Finding VTH. Finding VTH. So VTH को solve करने के लिए मैं यहाँ पर space ले रहा हूँ. And keep in your mind, I'm also taking source transformation. Source SOURC, source transformation of the circuit. ठीक है. So draw करते हैं circuit को. So we have 20, then 3. Agree. Then R is removed because it is load resistance. Then you look like that.